और राइट डे 6 इंटू पाइथन। कल हमने फॉर और वाइल लूप्स पढ़े थे एंड एक काउंटडाउन टाइमर बनाना है। टाइम डॉट स्लीप का मॉड्यूल लेके इंपोर्ट टाइम करेंगे एंड फर्दर वील गो इनटू द what was the condition after that. Let me just revise it. So it was nested loops. पहले प्रोग्राम बनाते हैं then we'll continue to nested loop. तो yeah, print hello world. Alright, प्रोग्राम काम कर रहा है. तो we have to create a program. We have to create a countdown basically. Countdown timer, right? Minutes में, seconds में and hours में. That's it. So input लेंगे यूज़र से. Let's say timer हमारा है int input, enter your time in seconds. The user will input the time. So that for x in range, for x in range 0 टाइमर से लेके 0 से लेके -1, ये हमारा क्या करेगा, टाइम को वो कर देगा ना. तो प्रिंट जो भी इनपुट लिया है f लगा दो और 0 0 0 0 यहाँ पे डाल दो सेकेंड्स, यानी कि अपना टाइमर कोलन लगा के 0 2 पे पैडिंग करा दो. जितना करोगे फिर उसके बाद में प्रिंट योर काउंट डाउन एंडेड. ठीक है, तो इसको रन कराओ. तो सिंटेक्स आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये तो काउंट डाउन हमने डाला 4 सेकंड का, तो तुरंत आ जा रहा है. अब इसमें दिक्कत यही आ रही है कि तुरंत काउंट डाउन कर दे रहा है ना. तो इसमें हमें एक फंक्शन यूज़ करने का, इंपोर्ट टाइम इंपोर्ट करा के फिर यहाँ पे टाइम स्लीप टाइम डॉट स्लीप और 1 सेकेंड डाल दो इसमें. तो टाइमर हमने डाला 3 सेकेंड का, 0 3 3. और यार एक 2 क्यों नहीं हुआ ये, और तो यहाँ पे क्या ये x रहेगा, x देखो 3 डाल दिया. यस, x की हर एक वैल्यू जो कम हो रही है वही x हम प्रिंट करवाएंगे. शुरू कहाँ से होना है, जो हमने इनपुट लिया वहाँ से शुरू होगा. स्टॉप 0 पे होगा लेकिन रिवर्स में होगा. अगर इसी को, हाँ ठीक है. अब बात आती है यहाँ पे सेकेंड्स मिनट्स. तो सेकेंड्स के लिए जो x है उसका मॉड्यूलस लो 60 के साथ. मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं याद है. मिनट्स के लिए x बाय 60, एक सेकेंड, x बाय 60, लेकिन इसका भी मॉड्यूलस लेना पड़ेगा. मॉड्यूलस 60 से, पर मुझे चीज़ नहीं याद आ रही है. हाँ, इंट में लेना पड़ेगा ये. सेम गोज विथ आवर्स. आवर्स में इंट x बाय
3600, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 3600 तो अब यहाँ पे हमें बस प्रिंट कराना रहेगा SI SEC आवर्स, है ना। पैडिंग रहेगी 2 की, यहाँ पे मिनट्स, मिनट, पैडिंग रहेगी 2 की। तो अब ये आ जाना चाहिए। यस, हमने डाला 3 सेकेंड्स, तो 1 आवर। 1 सेकेंड यार, कुछ दिक्कत है क्या? ये सेकेंड उसमें क्यों नहीं ले रहा है? ठीक है ना। और ये सेकंड्स को 60 में लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे होगा क्या? टर्मिनल डिलीट कर दो, फिर से लो। तो मैंने डाला, यार दिक्कत क्या हो रही है? मॉड्यूलस पे यहाँ पे मॉड्यूलस ही आना चाहिए। अबे कंटीयर लो। यार इस सेकेंड्स में क्या दिक्कत आ रही है? इसको भी इंटीजर में डाल दो क्या? पैडिंग भी सही है यार। अरे यार, सेकेंड्स को सेकेंड में तो करो। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो कोड रन कर रहा है। सो दिस वाज द मोस्ट बेसिक countdown timer in Python using time.sleep function, right? Let's move to nested loops. कितना टाइम लगा इसको करने में? 8 मिनट। Okay, let's go with nested loops. Hey everybody, so I guess in today's topic, I'm going to be explaining nested loops, it looks like. So a nested loop, think of it as a loop found within the code of another loop. You have a loop, right? Any code within that loop is indented underneath that loop. Well, you could have a looping structure found within the code of another looping structure. The loop on the outside is the outer loop. The internal loop within the outer loop is known as the inner loop. Where you'll encounter nested loops, it's really situational. You could have a while loop inside of a while loop, a for loop inside of a for loop, a for loop inside of a while loop inside of a for loop, etc. तो एक while में हो सकता है, while for में हो सकता है, for में हो सकता है। So here's a demonstration. Let's begin by displaying the numbers 1 through 9, but we'll use a loop. For x is our counter, in range 1, 10. Remember that the second number, in this case 10, that's exclusive. Then I will print our counter x. This program will print the numbers 1 through 9. Now we have an exercise at the end of this topic. I should probably explain this feature. So with a print statement, we end each सेकेंड यार, वो वाला प्रोग्राम बना लूँ। एक प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों, generate, write a program to enter your favorite food, after that another favorite food and you to quit. तो पहले तो इनपुट ले लो, फूड इनपुट
एंटर योर सेव फूड, ठीक है, फूड ले लिया। फॉर लूप लगाओ, फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स, वाइल लूप था क्या, वाइल था शायद से। फॉर लूप का एग्जांपल क्या क्या था? फॉर लूप शायद वाइल लूप में था। फॉर लूप, फॉर एक्स इन रेंज, अगर रेंज मान लो है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। हम्म, तो प्रिंट करो, एक्स को प्रिंट कर दो। इनपुट लिया, एक्स को प्रिंट कर, ये वाइल लूप वाला एग्जांपल था। वाइल, वाइल फूड, वाइल नॉट फूड, अगर फूड क्यू के बराबर हो जाएगा, क्यू, प्रिंट एफ, एफ नहीं डालो, योर फेवरेट फूड इज क्यू, फिर इसका इनपुट ले लो। और लूप से बाहर आने पे कह दो प्रिंट यू प्रेस क्यू टू क्विट। देखो काम क्या करा रहा पहले, पिज्जो फूड हो गया, पिज्जो, यू प्रेस क्यू टू क्विट। फूड और क्यू है, अगर क्यू होगा तो हमारे पास फेवरेट फूड क्यू आ रहा है, ये फेवरेट फूड क्यू आ रहा है, तो इसको करना पड़ेगा नॉट फूड। अब अगर नॉट डालोगे क्यू, अब यहाँ डालोगे क्यू, यू प्रेस्ड क्यू टू क्विट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डालोगे क्यू, योर फेवरेट फूड इज फूड, फूड, और यहाँ डाल दो एफ स्ट्रिंग, एंटर योर अनदर फेवरेट फूड, तो यहाँ चल जाएगा ये जे, फेवरेट फूड इज क्यू, ठीक है। फॉर लूप हो गया, Print statement with a new line character. If I need all of these numbers on the same line, at the end of my print statement, I can add comma, end equals an empty string. Normally with a print statement, each ends with a new line character, but we can set that to be something else. So when I run this again, all of these numbers are on the same line, or you could add a different symbol, like dash or a space. Each of these characters is now separated with a space, but let's stick with an empty string. Okay, so we have used a loop to count the numbers 1 through 9. What if I would like to repeat this 3 times? Well, I could create another loop. For x in range, you could say 1 comma 4, or you could just say 3, either way. Whatever code is within this loop will be executed 3 times. Let's cut our original for loop
then place it within the code of our new loop. Our outer loop will have this code repeat entirely 3 separate times. But we do have one thing we need to pay attention to. We have 2 counters with the same name. You'll want to be sure that they're different. Let's rename the counter of the inner loop to be y instead of x, and be sure to change that here as well. Now, when I run this code, we're completing, let's see, 27 iterations. To exit this for loop, entire through 9. What if I would like to repeat this 3 times? Well, I could create another loop. For x in range, you could say 1 comma 4, or you could just say 3, either way. Whatever code is within this loop will be executed 3 times. Let's cut our original for loop, then place it within the code of our new loop. Our outer loop will have this code repeat entirely 3 separate times. But we do have one thing we need to pay attention to. We have 2 counters with the same name. You'll want to be sure that they're different. Let's rename the counter of the inner loop to be y instead of x, and be sure to change that here as well. Now, when I run this code, we're completing, let's see, 27 iterations. To exit this for loop, we need to count the numbers 1 through 9. Once we do so, that is 1 iteration of the outer loop. But our outer loop is saying, hey, we still need 3 total iterations. Now, if you would like these on separate lines, let's make this look a little different. Let's add each iteration of the outer loop onto a new line. So within the outer loop, but not within the inner loop, I'm going to create just a blank print statement. This will just print a new line. Let's try this again. With the inner loop, we count the numbers 1 through 9. After we exit the for loop, we will print a new line, then repeat this all over again until our outer loop is satisfied. So that's basically a nested loop. It's just a loop that's inside of another looping structure. So let's create a project. We're going to print a rectangle made of some symbol that we set. We'll have the user type in how many rows and columns this rectangle will have. We'll reuse the ठीक है, तो लेट्स गो. while loop हो गया, for loop हो गया, nested loop. for loop का एग्जांपल, for loop का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स गो. तो for एक loop for x in range लिया, 1 से लेके 10 तक लिया. ठीक है, इंडेंट करा दिया. अब इसमें प्रिंट x, लेकिन x कहाँ तक प्रिंट करना है? एंड करवा दो, इक्वल्स टू एक एक स्पेस के साथ एंड करवा दो. तो एक एक स्पेस के साथ प्रिंट हो गया. लेकिन अब इसी सेम चीज़ को मान लो हमें करवाना है और फाइन रेंज 3 1 1 से लेके 3 1 से लेके 4 तक. लेकिन तो ये उसी चीज़ को कर देगा डिवाइड. अब मान लो इसी लूप के अंदर हमने प्रिंट करा दिया x को, तो हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें एक बार कराया तो एक बार करा के ख़त्म हो गया यहीं पे. लेकिन फिर ये 3 बार करा रहा, तो अगली लाइन में आता रहेगा बार बार. अच्छा, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट लिखो तो वही आ रहा है जो पहले आ रहा था ना, वही आ रहा है. इस वाले लूप के अंदर लिखो, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है. ये 9 2 बार क्यों आ रहा है? 3 कर दो तो भी 9 2 बार आ रहा है. 7 6 6. यार 2 बार क्यों आ रहा है? स्टेप लगाओ 0 है
x still exists and its last value is 6. अच्छा 7. So for prints final output 6x because 6 print. तो वो क्या रहा है x यहाँ पे 6 तक आ रहा है, फिर लास्ट वैल्यू फिर वो प्रिंट करके कर दे रहा है, ऐसा कुछ है। यहाँ केवल लिखोगे प्रिंट तो वो आ रहा है। ठीक है जी। This code that we have already written. So this time, let's accept some user input. Rows equals input. Enter the number of rows. Then we should typecast this input as an integer. Let's copy this line, paste it, change rows to columns for the second line, enter the number of columns. Then let's create a symbol. Symbol equals input. Enter a symbol to use. We already have this rectangle structure, right? Think of it as the outer loop is in charge of the rows. Let's change in range 3 to in range rows. The inner loop will be in charge of the columns. For y in range columns, we will print our symbol, whatever the user chooses. So let's try this again. Enter the number of rows. How about 4 rows, 10 columns? I'll use a $sign. So here's our rectangle. We have 4 rows, then 10 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's try it one more time. 3 rows, 5 columns, and I'll use an asterisk. Yep, 3 rows, 5 columns. So yeah, that's a nested loop. Really, it's just a loop that's inside of another loop. The type of loop really doesn't matter, as well as what's within each loop. It's just a situation where you have a loop inside of another loop. And yeah, those are nested loops in Python. Well, hello everybody. Today I will be ठीक है, create a rectangle ICTIVLE using for loop. तो आ लो, पहले रोज इनपुट करा लो। कॉल रो कॉलम सिंबल फॉर एसएन रेंज, इसकी रेंज में तो रो इनपुट करा दिया। रो की रेंज में फॉर वाई इन रेंज कॉल प्रिंट। प्रिंट क्या कराना है, सिंबल, तो वही वही सिंबल प्रिंट हो जाएगा।
दोबारा से जो हो जा रहा है। पता है सिंबल टेंटेशन अभी नहीं सही है। वेल एक्स लिया, ये रो में प्रिंट करा दिया, ठीक है। रो प्रिंट रो, सारी रो तीन तीन, रो तीन में तीन प्रिंट हो गया। लेकिन फॉर वाई इन रेंज कॉलम में प्रिंट सिंबल जो भी इनपुट लिया है प्रिंट सिंबल प्रिंट फॉर एक्स इन रेंज, ये कॉलम सिंबल प्रिंट कर दो, सिंबल ले नहीं रहा है। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ से प्रिंट कराना होगा। एंड देना ही पड़ेगा, एंड इक्वल्स टू स्पेस बार। ठीक है। So yeah, that's a nested loop. Really, it's just a loop that's inside of another loop. The type of loop really doesn't matter, as well as what's within each loop. It's just a situation where you have a loop inside of another loop. And yeah, those are nested loops in Python. Well, hello everybody. Today I will be explaining a few different types of collections in Python. There's 4 general purpose collections. 3 of them are lists, sets, and tuples. There are also dictionaries, but I'll save that for the next topic because they can be kind of tricky. A collection, I would think of them as a single variable, and I'm saying that within quotes, that is used to store multiple values. That's how I would explain a collection to a beginner. For example, let's say we have a variable fruit. Fruit equals some value, like apple. And then I can print this fruit, which is apple. I could turn this variable into a collection by surrounding my values with either a set of square brackets for a list, curly braces for a set, or parentheses for a tuple. Let's begin with the list. If I would like to store more than one value in this variable, I will surround my values with a set of square brackets. This variable is now a list. I can store multiple values separated with a comma. Not only do we have an apple in this variable, but we have an orange, a banana, and coconut. One naming convention that I like to use, if I declare a collection, such as a list, set, or tuple, I like to take the variable name and make it plural, just so that it's more obvious that this is a collection of values. Technically, in the English language, fruit would still be plural. English is a weird language. We now have a list of fruit named fruits. If I were to print my list, this is the result. We have all of our values enclosed with a set of square brackets. To access one of these elements found within your list, you can use the index operator, much like what we can do with strings. The first element would have an index of 0. That would print my value apple. Index of 1 would be my orange. 2 is banana. 3, coconut. What about 4? We don't have a value there. List index out of range. Each value in a collection is also known as an element.
If we attempt to access an element that's not found within our collection, you'll run into an index error. With the index operator, you could set a beginning index, an ending index, and a step. I would like the first 3 elements. You could say 0:3. That would give me apple, orange, banana. Technically, you don't even need the 0. You need that colon, though. We can even use a step. I would like every second element. Apple, banana. It's every second element beginning from index 0. Maybe I would like my fruit backwards. I'll set the step to be -1. Coconut, banana, orange, apple. You can use the index operator with collections, much like you can use with strings. Another cool thing you can do too with collections is that you can iterate over them with the for loop. For x in my collection, fruits. What would we like to do? I will print whatever x is. So we have iterated over our list. Apple, orange, banana, coconut. Now x isn't really too descriptive. What you'll see some people do is that with their collection name, it's plural. Their counter will be the singular version of that word. If our collection name is fruits, let's rename x as fruit, singular. It's not mandatory, but that's a common convention. It's more readable that way. For every fruit in fruits. If this were cars, you could say for car in cars. Our counter is storing whatever value is within our collection. So what are all the different methods that we can use with collections? To list the different methods that are available to a collection, you can use the dir function. Within this function, add your collection, fruits. But we would need to print this. Let's surround this function with a print statement. These are all in alphabetical order. We have attributes, which I have not explained yet, but I will in a future topic. But if we scroll to the end, we have a bunch of different methods that this list can perform. Append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, and sort. If you would like a description of each of these methods, there is a help function. Help, add your collection to the parentheses, then we would need to print this. Here's a description of all the methods and attributes. For example, we have our sort method. And here's a description. Sort the list in ascending order and return none. And then a bunch of other stuff. If you ever forget what you're capable of with a list or other collection, you can always use the help function to print a description of the attributes and methods available. If you need the length of how many elements are within a collection, there is the length function. Return the length of my list fruits, then let's print it. There's 4 elements within my list. The length function returns 4. If I were to add an extra element, like a pineapple, then that number would be 5. Let's remove that. Using the in operator, we can find if a value is within a collection. Is our value apple in fruits? But then we would need to print this. This operator will return a Boolean, so let's print whatever that is. Is apple in fruits? That is true. But is pineapple? Pineapple is not. It's false. You can use the in operator to find if a value is within a list, and that applies for your other collections too. With lists, they're ordered and changeable. Duplicates are okay. We can change one of these values after we create our list. Let's take fruits at index of 0. I will set this equal to be a pineapple. Then let's iterate over our fruit using a for loop. Okay, the first element is no longer an apple, it's a pineapple, then orange, banana, coconut. Using an index, you can reassign one of the values. If I were to change 0 to 1, well, now we have an apple, pineapple, banana, coconut. Let's cover some of the methods that are found within a list. We can append an element. Type the name of the list, dot, append. What would we like to append to the end of this list? Let's append a pineapple. I'm going to get rid of this for loop. I'm just going to display my list. There, we have an apple, an orange, banana, coconut, pineapple. To add an element to the end of a list, use the append method. To remove an element, you can use the remove method. Fruits.remove. Let's remove our apple. Our apple is no longer there. We have an orange, banana, coconut. Using the insert method, we can insert a value at a given index. Fruits.insert. List an index. 0 would be the beginning, then a value. Pineapple. Now we have a pineapple, apple, orange, banana, coconut. The sort method will sort a list. Fruits.sort. These are all in alphabetical order now. Apple, banana, coconut, orange. To reverse a list, you would use the reverse method. Fruits.reverse. Coconut, banana, orange, apple. However, these are not in reverse alphabetical order. These elements are reversed based on the order in which we place them. If you would like reverse alphabetical order, you can first sort and then reverse. Now we have orange, coconut, banana, apple. To clear a list, use the clear method. Fruits.clear. All of the elements are gone. We can return the index of a value. Let's return the index of apple. Fruits.index, list an element. Then we will need to print this.
Let's print the index that is returned. The index of apple is 0. Coconut, that would be 3. What if we don't find a value, like a pineapple? Well, we have an error. Pineapple is not in list. You could count the amount of times that a value is found within a list, because duplicates are okay. Fruits.count. Let's count how many bananas are in this list. Banana. Then print it. 1 banana is found within this list. How about pineapples? There are 0. Now, those are lists. Surround your values with a set of square brackets. These values are ordered and changeable. Duplicates are okay. Now let's talk about the next collection, which is a set. To create a set, surround your values instead with a set of curly braces. Our collection of fruits is now a set. A set has different benefits. The values are unordered and immutable, meaning we can't alter these values. However, we can add and remove elements. A set does not include any duplicates. I'm going to delete these methods, then print fruits. We have all of the same values. भाई मैंने तो बुलाया भी नहीं था, अपने आप आए थे यार। मानता हूँ मेरी गलती, मुझे नहीं बैठना चाहिए। Not fine. It's totally understandable that it is not fine. Ashvi, यार sorry यार। मुझे पता है ना क्यों फाइन नहीं। गलत तो है, गलत तो है, मुझे पता है ना गलत तो है, बट थोड़ा लेट रिलाइज हुआ है बस गलत का। मुझे उन्हें बोलना चाहिए था कि नहीं खेलना है। मैंने अपनी दीदी को बोला हुआ था। मैं बोला जब वो पढ़ रही होगा उसका बैठूंगा, क्योंकि आज उसका थ्योरी पेपर है कल, तो उसे पढ़ना था, मैंने बोला उसका बैठूंगा। नहीं, उसकी तबीयत खराब है इसलिए। and I need to give her, and I need to give her my emotional support. पहले सॉरी। समझ आ रहा है फिर मानना मान लो। ब्रेक क्या है जी? कुछ वो तो सही है, ऐसे बोल रहे चिल मारो, हद है यार सॉरी। लगता है मुझे समझ नहीं आता है कुछ भी। यार शीश।
but they're not in the same order as they were originally. Our collection values with क्या हो गया है यार, तू ऐसे क्यों कर रही है? क्या कर रही है? मुझे समझ आ रहा है तू क्या बोल रही है, ऐसा नहीं है समझ नहीं आ रहा है। गलती हो गई यार, जब रूम में आया तो बोलना चाहिए था मैं नहीं खेलने वाला हूँ, मुझे नहीं खेलना। नहीं, मुझे a समझ set आ of रहा है square यार। brackets. These values are ordered and changeable. Duplicates are okay. Now let's talk about the next collection, which is a set. To create a set found within this list. गलतियाँ मेरी How about मान pineapple? रहा हूँ। गलती ये है जब आपने किसी को बोला हुआ है तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए ना कि यार शिवी ऐसा नहीं है। शिवी ऐसा नहीं है कि वो दिमाग में नहीं आई, वो लोग माने नहीं है सच्ची में। बट मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे फालतू का एक्सक्यूज नहीं देना कि ये था वो था। मेरी गलती है। A set. To create a set, surround your values instead with a set of curly braces. Our collection of fruits is now a set. A set has different benefits. The values are unordered and immutable, शिवी meaning we can't alter these values. However, we can add and remove elements. A set does not include any duplicates. I'm going to delete these methods, then print fruits. समझ आ रहा है तुम क्या We बोल have all of the same values, but they're not in the same order as they were originally. A set is unordered. If I were to run this again, they will likely be in a different order. See, now we have a banana, apple, coconut, orange. To display all of the different attributes and methods of a set, you can use the dir function. क्या बोल रही है यार। And here's all of them. Some of these methods नहीं दूंगा मैं। मेरी गलती है और
गुस्सा कर मुझे चलेगा बट ऐसे मत बोल। ऐसे बोल रही थी, मैंने बोला तुम्हारी गलती है, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। बच्चा थोड़ी हूँ मैं। मेरी गलती है, मुझे उन्होंने बोला नहीं था मुझे नहीं खेलना भाई, मुझे काम करना है, मुझे बात करनी है अपनी औरत से। वो लोग बैठ गए और मैं भी बैठ गया। खेलने का मन नहीं था, ऐसा नहीं है खेलने का मन था। यार यार ऐसे मत बोल यार प्लीज, सॉरी ना। सॉरी नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ मेरी गलती। यार तो गुस्सा हो गया, कोई इतना उसका जो तुम बोल रहे थे, लगता है तुम क्या बोल रहे थे, तुझे भी पता है मुझे भी पता है अच्छे से तू क्या बोल रहे हो, राइट? मेरे में अकल है उतनी, आई गेस थोड़ी चीज सही बट है। आप जो अभी बोल रहे हैं ना वो टीएलए वाला मैं कर लूंगी एंड ऑल एंड ऑल, समझ आ रहा है श्रीवी। मुझे डांट लेना, मुझे डांटो यार पहले। शिवी शिवी डांट ले यार मुझे प्लीज, मैं गुस्सा मत हो बस। नहीं नॉर्मल अभी होना है। मजा आ रहा है मुझे कितनी नॉर्मल हो तुम। Methods are a little more advanced, but there's a few we might recognize, like add, clear, copy. For an in-depth description of these methods, you can use the help function. Much like what we did before. To find the length of our set, we can use the length function, which is 4. We can use the in operator to find if a value is found within the set. Unfortunately, pineapples are not within our set. Now, if I was to use the index operator of my set, this is what would happen. We have an error. Set object is not subscriptable. We're not able to use indexing on a set because they're unordered, much like what we can do with a list or a string. We can't change the values of a set, but we could add or remove elements. Let's use the add method to add, guess what, a pineapple. That is okay. Orange, apple, pineapple, coconut, banana. डांट ले मुझे, मुझे सच में डांट खानी चाहिए आपसे। शिवी ऐसे मत कर। यार शिवी डांट लेना यार, तुझे पता है क्यों डांटूं? वो जान पूछ के कर रही है, मुझे पता है ना। तू नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा फिर? राइट भाई, नेस्टेड लूप्स खत्म हो गया। यार कल शिवी यार करेंगे फिर जो भी बचा है। लेट्स सेट अप, कल कर लूँगा। दैट्स इट, वो बाय। अपना काम कर रहे हैं।